you keep him in your pocket, called your goat for a long time. So he is a dynamite which can explode any time. So you'll have to be very careful when he is raiding in your court. And that is what Tinku did. He was totally taken aback from that explosion. And now they will be playing on the do or die raid strategy. And this is nice to see from Tosef Ahmed. Just will be going back with an empty raid is what his brain says, but somewhere wanted to have a try. No, will go back. Now, Sonu Latwal, can he produce something else in this do or die raid? He looks good today. He's got that pace. He's not gone near Mahendra Chaudhary, which is really nice. Lokesh Gosalia and even somewhere going Gurjar were put to a lot of tests. Now it all depends on Kapil Gurjar. It all depends on Kapil Gurjar. Can he hold himself back and don't go for the advance second back? Very well done by Mahendra Chaudhary. Nice that Kapil Gurjar did not go for the advance tackle, and Mahendra Chaudhary now going in with the two hands. Look at that. That is what I said. When you go in for the diving ankle hold, you go with two hands. Go ahead. और नवीन और बिल्कुल खूबसूरती के साथ यहाँ पर उन्होंने जिस तरह से एंकल होल्ड्स के लिए गए, और इस बार देखना होगा गंगाराम बिट्टू और डायरेक्ट में 4 के डिफेंस में पॉइंट लाना मुश्किल होता है, और यहाँ पर डिफेंडर्स ने शायद एक पॉइंट गिफ्ट कर दिया है। देखना होगा किस तरह से यहाँ पर क्या मनदीप अपने आप को संभाल नहीं पाए, लेफ्ट कॉर्नर से लॉबी में चलेगा। ये है वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जिस तरह से किक से वो अनसेटल करते हैं, जिस तरह से वो स्पीड दर्शाते हैं, वो स्पीड इनमें नजर आ रही है, और एक बार फिर से वो स्पीड से कार्य करते हुए नजर आए, और बहुत ही काबिल तारीफ गंगाराम। Was not ready, Harshit. As I was saying, I'm just saying this not by just 1 or 2 games. It is a process, or it is the road to getting that name or getting that tagline. See how he explodes. Because of the explosion on the defender in a do or die raid situation. Just imagine what Mandeep had to go through. Now in a super tackle situation, the explosion has been nullified with a strong ankle hold, and that was nice to see by Mohit Narwal, who finally gets a tackle point towards his name and to his team. जी हाँ, बिल्कुल मोहित नरवाल जिनके इस मुकाबले से पहले 43 टैकल पॉइंट थे, इस बार बहुत अच्छे अंदाज से इंश्योर किया कि सही समय पर वहाँ पर सपोर्ट आया, और गंगाराम को बिल्कुल भी गैप नहीं दिया कि आप यहाँ से एस्केप कर पाएं। और जिस तरह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे गंगाराम के विषय के बारे में, तो क्यों उन्हें जिस तरह से एक्सप्लोजिव मटेरियल कहा जा रहा है, क्योंकि जब वहाँ पर आवश्यकता हो रही है और कुछ ऐसा अपने पिटारे में से निकल कर आ रहे हैं। इस बार देखना होगा अक्षित अच्छे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, महेंद्र चौधरी को अपना शिकार जरूर बनाया है कई दफा। अब जरूर सब्स्टिट्यूशन की यहाँ पर बात हुई है, क्या हम्पी हीरोज की तरफ से नजर आएंगे। संदीप नरवाल को आने का मौका मिला है, बिट्टू की जगह यहाँ पर संदीप नरवाल आए हैं। आज दोनों ही संदीप को मौका नहीं मिला था स्टार्टिंग 7 में, कल भी हमने देखा कि संदीप नरवाल को यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन के बाद मौका मिला, और आज भी राइट कॉर्नर अब संभालेंगे। तौसिफ अहमद रेड पर हैं, लेफ्ट रेड के साथ शुरुआत। Just to increase the defensive force, there Ramesh Narwal bringing in Sandeep Narwal. Now Tosef Ahmed will be doubled upon, and that is what he was not happy with. Look at that, the complete angle was cut away, and the moment where Sandeep Narwal has come in, Tinku also gets a separate confidence booster for himself and goes in for the block and cuts out the angle for Tosef Ahmed. But Ankit Jack, of course, unlucky at, in fact, this is correction, Akshit. He was unlucky this time, but then uses the lobby and goes towards the midline and also revives, I guess, Sonu Latwal. जी हाँ, शायद वहाँ पर आपको सोनू हीरोज गया, और इस बार फिर से हम्पी हीरोज की तरफ से सब्स्टिट्यूशन होता हुआ नजर आएगा। देखना हो कौन से खिलाड़ी को अंदर बुलाया है, और सोनू नतवल की जगह संदीप को अंदर बुलाया है, यानी कि दोनों संदीप अब यहाँ पर आपको नजर आएंगे, और सोनू नतवल यहाँ पर अब आपको थोड़ी देर के लिए बेंच पर बैठते हुए नजर आएंगे। क्या शायद एक ये कारण है कि थोड़ा सा क्या अपने आप को इंजर्ड या आपका थोड़ा सा क्या कहीं निगल है, जरूर स्क्रीन पर ऐसा नजर नहीं आ रहा है, यूईएम उनके आसपास नहीं नजर आ रही है, तो क्या इसके पीछे की वजह हो सकती है नवीन? 2 points, Aravalli arrows. Yeah, I will just come back to that, but Govind Gurjar now has made sure that he wiped off the left cover and the right corner. Look at that. The left cover went in for the thigh hold, but nobody came in to take care of the dangling hand, and then the right corner also gave away that unwanted point. Bittu and Mohit Narwal going off
So it's really important now for Akshit to make sure that he takes up on the raiding responsibilities, because when he got that point, I was sure. That is a Jadoo Point ki Aravalli Japti arrows. coming in very strongly from the left cover and did not allow any angle to cut across. Look at that pocket dynamite once again. Gangaram making sure he also explodes in the defense. जी हाँ, यही वो संकेत दर्शा रहा है कि जब आपके लिए आप अपना अच्छा प्रदर्शन करना चालू कर देते हैं तो समय भी आपका वहां पर साथ देता है। लगातार यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन और इस बार फिर से क्या पावरफुल किक। नवीन, आपने क्या शॉन माइकल्स को देखा है WWE में, जिस तरह से वो मतलब चेन पर किक लगाया करते, देखिए उतनी ऊंचाई के साथ यहाँ पर ऐसा लगा कि चेस्ट को छूता हुआ निकला और क्या लाजवाब यहाँ पर किक थी। Akshit, you following Shawn Michaels, that shows how old you are. I only follow, the recent ones, the Roman Reigns and all that. Come on, Harshit, you're following Shawn Michaels. Wow. I'm watching the highlights, bro. That's a good comeback. That's a good comeback. Nice. Very nice. What a But yeah, point. just talking Heroes. about Gangaram, it is nice to see because Nitin Deshwal was a tall defender and he did not stay low, obviously, because the kick was coming to his right shoulder. Now once again he tries that kick and Tinku says, no, what are you saying? No, you didn't get me. और ये Has he got him on the running attack? Very, very easily done on Sandeep. What is Gangaram had today for the breakfast? I guess it is something to do with explosion. So, are you talking about the chili? Yeah, should be, because that is what he looks like, and that's also see somewhere it's a nice name. See, Pocket Dynamite, of course, is a name which is always very common for Gangaram, but a diving angle hold comes in from the left corner of the Aravalli arrows, and bonus being awarded, and the all out at the right nick of the time where the first half has been concluded with that all out. Tinku tried his best but could not go across towards the midline. The first half done and dusted. Harshit, if you can tell me, something like, there is a when you spoke about the mirchi bhaji, there is one mirchi which is very, very tikha, very hot and spicy in our place. Okay, in towards Tamil Nadu, towards Karnataka and all that. So and especially towards the north of Karnataka, we have something called the Badgi Menchinkai. Okay, it is very short to look at, but it is very hot. It is explosive. Can you come up with a name for that in Hindi? Is there any mirchi which is very short to look at and very, very fika? देखिए यहाँ पर जयपुर की एक बड़ी फेमस, देखिए सिर्फ जयपुर ही नहीं, राजस्थान के एक बड़ा फेमस जिसे आप फूड कहते हैं वो मिर्ची बड़ा। देखिए मिर्ची बड़ा नवीन एक बहुत ही बेहतरीन एक फूड की मैं बात करूँ बहुत नहीं, I understand. No, I understand mirchi bada. No, I understand mirchi bada. I'm just trying to get your help in naming Gangaram, because yes, Pocket Dynamite is a very common name. It is nice, but the way he's rated today, of course he's exploded. But I want a name from you of a mirchi variant, of a mirchi crop variant that which looks a little short and is very, very spicy. और चलिए जरूर इस पे सोच विचार मैं कर रहा हूँ। जैसे ही थोड़ा सा नाम क्लिक होता है मैं प्रयास कर रहे हैं नवीन आपकी हेल्प के साथ हम एक ऐसा नाम यहाँ पर बनाना चाहेंगे जो सच में इनके साथ इंसाफ करे, उस नाम के साथ इंसाफ करे। Yeah, definitely. No, because see, that Badgi Menchinkai would have been a nice thing, but it's so much of a South flavor, too much of the Kannada or the Tamil mix, the Badgi flavor. But I want a overall India name from you, Harshit. बिल्कुल, और उससे पहले एक छोटे से यहाँ पर मैं रेड पॉइंट्स की बात कर लेता हूँ। 16 रेड पॉइंट्स अरावली एरोज को मिले हैं, 10 मिले हैं हम्पी हीरोज को। पर देखिए नवीन, आपने जो वहाँ पर उस फूड की बात की नवीन, तो हम सभी को उसका टेस्ट का पता लग जाएगा अगर आप उसे यहाँ एक बार भिजवा दें, हम सभी को टेस्ट करा दें। तो ऑल ओवर इंडिया के लोग यहाँ पर हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग यहाँ पर हैं, तो शायद उस नेम को यहाँ पर अप्रूवल भी मिल जाएगा अगर आप उसे हमें टेस्ट भी करवा दें। Yeah, definitely we'll do that. Now, until we get the right name of the chili, we will just go ahead and call him the Pocket Dynamite as Gangaram. Today he has exploded, and like how he has actually made sure the Hampi Heroes
to not get any part of his body, whether the ankles, whether the thighs, or whether even the waist holds, to be tackling him and down. I guess he's been tackled only once in the first half, if I'm not wrong. जी हाँ बिल्कुल, और वहां पर सिर्फ एक दफा वहां पर आपको टैकल होते हुए नजर आए थे। और अब अक्षित जरूर यहाँ पर अब लेफ्ट रेड के साथ महेंद्र चौधरी से जरूर बचकर रहना होगा, जिस प्रकार से प्रदर्शन वो करते हुए नजर आ रहे हैं अपनी टीम के लिए। और टैकल पॉइंट्स की अगर हम बात करेंगे तो एक टैकल पॉइंट्स वहां पर कई खिलाड़ियों को मिलता हुआ नजर आया है। और लगातार यहाँ पर समय दे रहे हैं अक्षित, ज्यादा अंदर जाने का प्रयास नहीं, इंतजार कर रहे थे। लुकेश कुशलिया का यहाँ पर पावरफुल सिंगल थाई होल्ड, देखिए नवीन बिल्कुल से मस नहीं होने का मौका दिया। Please don't disturb the match. Very much, and he did not even think twice for going for that tackle, even though it was so close towards the midline, and that was nice. And now Sonu Latwal comes back. Sonu Latwal now comes back, and it is nice to see that he just had that little bit of a break, and then comes back, I guess, refreshed. And Sandeep Narwal tries his hand. और वहां पर संदीप की भी हमने बात की, अब जरूर राइट कॉर्नर वहां पर संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखकर अच्छा लगा कि सोनू लतवल को अब फिर से जिस तरह से आपने बताया नवीन की वहां पर मैट पर आ चुके हैं। 16-27, थोड़ी सी अब वार्तालाप कर लेते हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स डिफरेंस की। तो अरावली एरोज के पास 11 पॉइंट की लीड है, 18 मिनट का लगभग समय शेष है। जय भगवान मौजूद यहाँ पर अरावली एरोज के लिए नहीं है, नितिन धनकर वहां पर हम्पी हीरोज के लिए मौजूद नहीं है। सोनू लतवल और गंगाराम जो यहाँ पर दो मेन रेडर्स आपको नजर आ रहे हैं। अभी तक दोनों ने अच्छा कार्य किया है, परंतु आप सोनू लतवल एक बार पॉइंट मिलेगा। किसे शिकार बनाया है नवीन, क्या अंकित जाट? Yes, I think the right corner was very advanced in the way he went in for the goal, but somewhere Sonu Latwal coming back after that little bit of a break has given him that extra power to take away the ankle holds. And now it's a do-or-die raid, and very tough for Sandeep Narwal to just play on top of the back line. That is not what is required. He'll have to go in, he'll have to make sure something happens, and there we go. Has he taken the line? No! Aravalli Arrows. Has he? Right, that's Joseph Ahmed. Correction, I'm really wanting to see that outward turn. And then, touching the midline. He was actually appealing for the referees, but Joseph Ahmed somewhere touched the midline but did not cross it. जी हाँ बिल्कुल, इस बार वहां पर 28-17 इसी के साथ स्कोर हो जाएगा। सोनू लतवल एक बार फिर से, और जिस तरह से आपने पिछला वहां पर तौसिफ अहमद का प्रदर्शन देखा, तौसिफ अहमद को जरूर एक पॉइंट वहां पर मिलता हुआ नजर आया है, क्योंकि जब एक खिलाड़ी महज उन्हें पकड़ रहे थे, शायद उन्होंने उस समय मिड लाइन को क्रॉस कर दिया था। उसके बाद यहाँ पर आके संदीप ने उन्हें हैंड टच किया था, हैंड टच यहाँ पर सोनू लतवल। मैं इसके बारे में बात ही करने वाला था नवीन, हमने लगातार पिछले मुकाबले में बात की थी कि वो कवर के खिलाड़ियों को लगातार शिकार बनाते हैं। आज कॉर्नर्स को अपना शिकार बना रहे थे, यानी कि वर्कआउट कर आए अपने ऊपर, और अब उन्होंने अपनी मेन स्किल पे काम किया है, आसानी से कवर के खिलाड़ी को अपना टच पॉइंट प्राप्त किया है। Yeah, and this 10-point lead now for the Aravalli Arrows, as once again Gangaram comes in. Okay, and he's been tackled upon, but somewhere it is the brilliance of the right corner, in fact the left corner that time. Oh, has something happened? Oh, Gangaram has been just injured on the right eye. I guess there will. Oh, in the left ear. I'm really concerned, because if it's ears, it should not bleed. If it's bleeding from the ears, then he'll have to go in for the scan. That's really important. And we have our physio partners, UEM, University of Engineering and Management, to take care of that. And as we were actually searching a name for him, he will come back strong. He will come back hot and spicy very soon. But now, Sonu Latwal, he says that his inspiration, of course, is Pardeep Narwal. And I see Gangaram walking off. You see that the physio partners have just told him, okay, don't bother. It is just a small dash that was there in the tackle that was put from the left corner, and then he's sent off. So that was Sandeep, who was coming in across Gangaram and had that little bit of a collision. But nice to see that he went back on the bench. जी हाँ बिल्कुल, ये देखकर अच्छा लगा। Sonu Latwal, Harshit,
Yes. Sonu Latwal, he said he's told he shared his feel of what he is always and from where he has played kabaddi and all that, and he has said that his big inspiration is Pardeep Narwal. So what does Pardeep Narwal do when points has not been given to him? Does he stand and argue? Does he stand and shout on the court? Absolutely. That is inspiration, isn't it? That is inspiration. So now Sonu Latwal is becoming an inspiration himself for so many young kabaddi aspirants. So you'll have to think about that. I will not say anything. He will have to think about it. एब्सोल्युटली नवीन, ये बिल्कुल आपने पते की बात की है। देखिए, कहना बड़ा आसान हो जाता है कई बार, वो इंस्पिरेशन वर्ड को कई बार हम बड़ा छोटा आंक जाते हैं। इंस्पिरेशन हम कभी कभार सिर्फ खेल में देख जाते हैं, परंतु उनके जो साथ में उनके हाव भाव हो, जिस तरह से फील करते हैं, अब देखना होगा क्या मैच पर जिस प्रकार से प्रदीप नरवाल प्रदर्शन करते हैं, डू और डायरेक्ट में स्पेशल अपनी प्रदर्शन दिखाते हैं, वो कर पाएंगे। इस बार जरूर पिन डाउन हो जाएगी। बहुत अच्छा डिफेंस यहाँ से नजर आया। शायद यहाँ पर बिल्कुल डबल थाई होल्ड पर जाते हुए नजर आएंगे आपको कौन से खिलाड़ी। जी नंबर 6 जर्सी और नंबर 9, यानी कि वहां पर लोकेश गुजलिया का एक शानदार प्रदर्शन जारी है। सुमित चौधरी के साथ शायद that was a very good combination tackle as Sonu Latwal somewhere reducing the pace of that run, and that's why that was an easy tackle for the defense. But now it's a do-or-die race for Tosif Ahmed, who's done well for the Aravalli Arrows today, but he should not be very, very confident of the bonus. If he is doubly sure, only then he has to go back. The do-or-die race, Tosif Ahmed, if you are not sure, he's been saved on the bonus. But generally, I'm not a very big Raiders, really vouching on the bonus in a do-or-die raid. That can be a little tricky sometimes, and now it's Akshit who will try and get some points for the Hampi Heroes. Yeah, but just talking about Gangaram's name, and then the dash comes in with Govind Gurjar. From the side to turn. That was the problem with Akshit. He turned on the wrong side. He turned towards inwards of it. He should have turned outwards. The moment he saw Govind Gurjar coming in with the force in the left cover, he should have turned outwards instead of inwards. He had the space, he had the momentum, but could not do it. But yeah, just talking about Gangaram Harshit, see, let me tell you some names of what we are familiar with. Guntur Mirchi is from Andhra, that's very spicy. And Mundu Molaga, it is from our state, Tamil Nadu, and also one of my other states in Karnataka is Jadgi Menshinkai. That's what the three names that I can come up with, but I'm waiting for your verdict for Gangaram's name. देखिए, एक्चुअली मैं आपसे जरूर आप पर जिस तरह से एक्सपेरिमेंट होते हैं ना, वो मैं साइंस एक्सपेरिमेंट आप पर जरूर कराना चाहूंगा बायोलॉजिकल, क्योंकि एक माइंड आपका कबड्डी पर है, तो कौन सा माइंड आपके लिए कार्य कर रहा है वर्ड ढूंढ कर लाने का। जिस तरीके से आपने बड़ी खूबसूरती के साथ 3 नाम बता दिए, आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर मैं वहां सोचने चले जाता हूँ कुछ नामों की तरफ, तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कबड्डी को मिस कर रहा हूँ। और आप दोनों खूबसूरती के साथ यहाँ पर बात कर लेते हैं, और जो भी आपने 3 नाम लिए, मैं थोड़ा सा उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा भी हिचकिचाऊंगा, परंतु जिस तरह से आपने बताया नवीन, वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। और ये आपके एक्सेप्शनल स्किल्स हैं कि मुझे लगता है कि आप में 2 माइंड है। 3 इडियट्स की मुझे वो वायरस की याद दिला रहे हैं शायद आप। No, I'm not virus. I am not Viru Sahasrabuddhe. I am more of lovely toe touch. Yes, the right moment, and that really applauded very nicely by the coach, and he was happy with that race. Look at that. When the defense was casual, Tosif Ahmed made them a casualty. Unbelievable. Right corner did not expect that at all. Oh, that's the rage of the match for me, and play that again and again. If you become a casual, you will be a casualty on the kabaddi match. That's the biggest example. Hampi Heroes! Good for the back, and Sonu Latwal has been shoved off the court again. But no mistake with Sonu Latwal. He turned on the right side. Look at that. That was a very, very correct way to turn towards the lobby, outward turn. He did not turn towards the defender, but the momentum of Govind Gurjar just pushing him away. जी, और बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना हाथ स्ट्राइड भी कर रखा था नवीन, आपने देखा तो उन्होंने अपने पूरे हाथ का उपयोग किया वहां पर गोविंद गुर्जर ने, और ये उनका मोमेंटम, ये उनकी फॉर्म, और फॉर्म बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, चाहे किसी भी खेल हो। कल जिस तरह से आपने अभी पिछले मुकाबले में आपने जिस तरह से बात की कि दिनेश कार्तिक को मौका मिला, उन्होंने मौके को बुनाया, बहुत अच्छी बात लगी जिस तरह से आपने उसे रिलेट कराया।
जो आपने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबले को रिलेट कराया कि कभी भी खिलाड़ियों के पास एक मौका बन जाता है, बट आपको उन परिस्थितियों में अपना प्रदर्शन करना होता है और उन्हें लगातार कभी भी मुकाबले में ना हो। इस बार जरूर पॉइंट मिलेंगे यहाँ पर शायद टिंकू को। 2 पॉइंट्स कवर के खिलाड़ियों को शिकार बनाएंगे। Yeah, I was just relating the dressing room experience. You know, more than Dinesh coming into form, which was very much required for India than him, and it was a match-winning innings that he played. It's all because of the dressing room. It's all because of Rahul Dravid, Vikram Rathore, you know, where they have put across a lot of time in Dinesh Karthik's form. So the dressing room atmosphere becomes really important. As once again, Tausif Ahmed, after that brilliant raid that he put in to take off Mohit Narwal, now has a pack of 6 to take some points from somewhere. अभी तो शायद सिर्फ अपना यहाँ पर एम्प्टी रेड करते हुए शायद तौसिफ अहमद नजर आए, या फिर बोनस का प्रयास किया है। बोनस का वहाँ पर मांग जरूर करना चाहेंगे, क्या प्राप्ति हुई है या फिर नहीं, जरूरी है। एक रेफरी पर उन्होंने जाने दिया और चलिए अब 8 नंबर जर्सी बड़ी जल्दी से जाएंगे, बड़ी जल्दी से आएंगे। परंतु क्या नवीन आप इस मुकाबले में हम्पी हीरोज की वापसी यहाँ से देखते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि इस तरह से किस तरह के खेल में उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता है कि हम्पी हीरोज इस मुकाबले में वापसी करें? Sonu Latwal has looked good in his match, and he has to raid as if he was raiding in the first half. Somewhere in the second half, he's once again looking that lethargic and somewhere little feeling not too quick on his feet as he was in the first half. But that break that he took should have helped him actually. But I'm just feeling that pace has to come back for Sonu Latwal very soon. And somewhere you'll have to find a way to stop Tausif Ahmed. The defense has to find a way to stop Tausif Ahmed because he's running away with points. As Gangaram will also come back. The moment when he is fit and fine, he will come back for sure. So somewhere, Hampi heroes have got a lot of thinking. And as I mentioned, Gangaram, he is back. And into a do-or-die race. After that collision when he went off. And now he's back to the do-or-die race. And let me just go ahead and find this. If he corrects the midline. The explosion was there. But then, strong ankle hold. And more stronger was the support. Timing ankle hold and the support was right in time. Once again by Mohit Narwal. All marks for Mohit Narwal for the support that came in. Okay, let me just name Gangaram. After yes, this tackle has been successful. Point. Yeah, can we call him? Number 9. Can we call him Jwala? 9 number. This is a Jwala Mirchi that has been grown in Gujarat, and it is just right next to the ghost pepper. See, ghost pepper is the spiciest one in India. The ghost pepper mirchi is definitely the spiciest one, but does not look good, no? Calling Gangaram ghost pepper, no, doesn't look good. So it is actually Bhut Jolikia, so that's very tough to even pronounce. But ghost pepper Gangaram, no, doesn't look good. Something to do with Jwala. Jwala is nice. Yes. Jwala. Yeah. और ज्वाला साथ ही साथ देखिए ऊर्जा का संचार भी होता है ना। जिस तरह से ज्वाला जो शब्द है अपने आप में एक बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने उस शब्द को चुना है नवीन। जिस तरह से ऊर्जा वहां पर नजर आती है, चेतना नजर आती है। और नवीन इस बार सोनू लथवाल फिर से प्रयास जरूर किया, बहुत अंदर डीप जाकर किक लगाने की कोशिश की। एक और बार अरावली एरोज के डिफेंस ने उन्हें पिन डाउन करते हुए नजर आएंगे। एक बार जंप जरूर ली थी, परंतु उसके बाद लोकेश गोसलिया और साथ ही साथ वहां पर सुमित ने इंश्योर किया कि बिल्कुल सोनू लथवाल इस बार जरूर शायद कपिल गुर्जर हो गया, थोड़ी सी चोट पहुंची है। Yeah. See, I will not be very concerned if it is not the legs. My only worry will be when a player goes on holding his legs. Apart from that, it's all fine. These lads are tougher than Kabaddi. Kabaddi is a tough sport, but these lads are tougher than Kabaddi. No problem at all. For Kapil Gurjar, he's a strong lad. He will just have some few moments of one will look like two will look like four. That's fine. He will be fine. Have a sip of water. That should be fine. But Tausif Ahmed, what do you have to say about him? And the way he's graded today in the absence of the Bhim Jai Bhagwan, and he's completely taken that responsibility on himself as the
Gangaram's explosions were in the first half, Tosif is made sure the second half also belong to the Aravalli arrows. फैंटास्टिक प्रदर्शन मार्वलस प्रदर्शन करते हुए नजर आए और अक्षित से भी जरूर मैं इंप्रेस हूं, परंतु तौसिफ अहमद की आपने बात की और सिर्फ आज का मुकाबला नहीं, कल का मुकाबला भी हमने बहुत ही बारीकियत से देखा था नवीन, कि जिस तरह से वो लगातार जब उन्हें कहा जा रहा है कि आप जाइए और अच्छा प्रदर्शन करें। अब ये डू और डायरेक्ट में असल परिचय होगा इनका, देखना होगा किस तरह से यहाँ पर डू और डायरेक्ट में अपना प्रदर्शन करेंगे और लगातार गलतियां करते हुए नजर आ रहा है, इसकी आवश्यकता नहीं थी। संदीप नरवाल पिछली बार जरूर तौसिफ को अपना, गंगाराम को माफ कीजिएगा, शिकार बनाया था, पर इस बार बहुत ज्यादा एडवांस, इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी नवीन यहाँ से, क्योंकि डू और डायरेक्ट महज अभी शुरू हुई थी। See, that tackle did not have strategy or execution both, because Sandeep Narwal just thought that Tosif will come to him. Then when he did not come towards him, he did not stop himself. And Kapil Gurjar is back with another dash. And I just said that, you know, it is fine for these lads. Look at that. Who can you tell that this was the lad who was just down on the mat a while ago, just holding his head? That's it. Kabaddi is tough, but these lads are tougher, and I'm happy to see that. Now, Jwala Gangaram comes in. So Jwala is a mirchi. It's a chili that is grown in Gujarat, mostly, of course, in the Kheda place of Gujarat there. And it's very well. If you notice, or if you, I'm sure you've eaten vada pavs a lot, Harshit, isn't it? Yes, for sure. With vada pav, with vada pav they give a small mirchi which is short and green but very spicy. That is the Jwala mirchi. Point Aravalli So arrows. somewhere Gangaram can be given that name. But once again, a strong dash from Kapil Gurjar after the ankle hold from Lokesh Gosulia. And this is combination tackle at its best. And now somewhere Aravalli arrows will be feeling that where is our Bhim? और बिल्कुल जिस तरह से आपने बात की, परंतु चलिए एक छोटा सा विषय मैं यहाँ पर लेकर जाना चाहूँगा हम्पी हीरोज के साथ नवीन, इनकी ये लगातार दूसरी हार यहाँ पर होती हुई नजर आ सकती है। काजीरंगा राइनोज के विरुद्ध पिछला मुकाबला हारा है, पिछले मुकाबले की मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी। और सोनू लथवल की आपने बात की, तो सोनू लथवल को पिछले 2 मुकाबलों से अगर मैं बात करूँ नवीन, तो फर्स्ट हाफ में उन्होंने, जब उनका 2 मुकाबले पहले का मुकाबला था तब भी उन्होंने 9 पॉइंट प्राप्त किए थे, उन्होंने समाप्त किया महज 11 पॉइंट से। पिछले मुकाबले में भी हमने बहुत सारी उनकी बात की थी, पहले हाफ में बहुत ज्यादा पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं, परंतु सेकेंड हाफ में 4 या 5 पॉइंट मैक्सिमम लेकर आ पा रहे हैं नवीन। ये एक चिंताजनक विषय है, परंतु चिंताजनक विषय क्या यहाँ पर होगा अरावली एरोज के लिए? गोविंद गुर्जर डू और डायरेक्ट, 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है, नंबर 6 जर्सी नितिन देसवाल को अपना क्या शिकार बनाया है। Lovely jump, and made sure Nitin Deswal did not understand where that jump was coming in from. He was low, but then wanted to jump over him, and somewhere trying to retrieve. Nitin Deswal did very well, but Govind Gurjar was lucky to get that jersey. Just touching his hand and going to the lobby also to confirm that he's got that. Then Mohit Narwal does not put up even a fight, understandably, because he's a defender. और आसानी के साथ इस बार गोविंद गुर्जर कपिल गुर्जर की जोड़ी, एक गुर्जर भाइयों की जोड़ी हमने सर्वाइवल राउंड से शुरू की थी इनकी वार्तालाप, और एक बार फिर से देखिए दोनों ही खिलाड़ियों ने यहाँ पर 3 टैकल पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लिए हैं। जिस प्रकार का प्रदर्शन, और लोकेश गोसलिया को भी आप कैसे भूल सकते हैं, जिस तरह से 3 खिलाड़ियों ने, और ये नितिन धनकर जरूर इंतजार कर रहे होंगे, बड़ी बारीकियत से यहाँ पर हम्पी हीरोज के प्रदर्शन को देख रहे होंगे, मुझे कब फिर आखिरकार मौका मिलेगा हम्पी हीरोज के लिए। और देखिए तीसरे पायदान की लड़ाई है, और तीसरा पायदान की हमने बात की कि पहले, दूसरे और तीसरे पायदान पर जो अंक तालिका पे टीम होगी, बूस्टर राउंड की समाप्ति के बाद उन्हें कैश प्राइज से रिवॉर्ड दिए जाएंगे कि अगले जो 2 दिनों की छुट्टी होगी उसमें जाइए, थोड़ा सा सोच विचार कीजिए, थोड़ा सा क्या खर्चा, थोड़ा सा क्या पार्टी भी आपको नजर आ सकती है उन दिनों में। Yeah, definitely, and Nitin Dhankar sitting and waiting in is a good sign, because Hampi Heroes can definitely fall back on him any time. And given the form that Sonu Latwal is in, and what a right calculation by you, Harshit, really very well spotted. Because yes, Sonu Latwal does well in the first half. This is the strategy. Now I'm able to understand why Kapil Gurjar always was doing this against Manu.
of the Kaziranga Rhinos. Look at this for a strategy. He went back behind the defense line and he was right there in front of him saying, "मैं प्रत्यक्ष हो गया." That is what he said. And the raider was taken aback with the surprise of his life. And Kapil Gurjar's thinking is now coming into a good effect. We were actually confused to see why he was doing that. Because when you go back behind the defense line, you are already reducing the defense from 7 to 6 or from 6 to 5. So when you go and stand there near the midline, the raider has lesser men to attack with. But then when the running hand touch happens, and Kapil Gurjar was in the right place. But that does not fire all the time. It's a good strategy, nice to see on camera, good when it comes off well. But when it does not come off well, and this pursuit, when it does not come off well, Kapil Gurjar has to go back on the bench. जी हाँ, और कल भी हमने देखा था कपिल गुर्जर को इस प्रकार से वहां पर अनुज यादव को उन्होंने शिकार बनाया था मराठा मावल्स के विरुद्ध जब मुकाबले में थे। ये प्रयास करते हैं, परंतु पहले हमने देखा था कि कई बार गलतियां अतिरिक्त कर रहे थे। अब कपिल गुर्जर को देखा है कि जब इनकी टीम एक अच्छी कंफर्टेबल लीड में आ जाती है तब ये करने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि कहीं अगर बड़े मुकाबलों में इसकी आवश्यकता पड़ जाए तो इसकी पूरी तरह से मैच प्रैक्टिस होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि जरूरी नहीं है जब तक आपके लिए कार्य कर रही जब तक कर रही है, जब आपके लिए थोड़ा सा अपोजिट जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। ओ लोकेश गुसलिया ने अपनी पोजीशन में बदलाव किया था शायद नवीन, वहां पर वहीं से भी वही उन्होंने कार्य करने की कोशिश की। ये देखिए एंकल होल्ड, चाहे आप उन्हें कहीं भी भेज दीजिए वो एंकल होल्ड लगातार करने का प्रयास जरूर करेंगे। Yeah, and that time Sonu Latwal was little lucky. Here is talking about Sonu Latwal once again. His second half is very, very important. 1 point. As Aravalli Arrows. team has shown it for Aravalli Arrows all the time, Jay Bhagwan. It is very important to score in the second half because the movie may be good in the first half, but if the second half is bad, then the movie is a flop, right? So that is what we need to think about Kabaddi as well. First half, if it is even above average, that's fine. But where it relies is in the second half, where you really need to go for the kill, where you really need to, steer your team towards the winning post. Very important to score in the second half. And yes, rightly pointed out by you. Sonu Latwal once again tackled down, and he has looked weak in the second half. He has looked slow. He has looked weak in the second half. And was it Tausif Ahmed going in with a surprise ankle hold? Yes, it was from the left in. And Tausif Ahmed's confidence growing even in the defense. क्या शानदार वहां पर डबल लेग होल्ड था, बहुत ही अच्छे अंदाज से। और ओ यहाँ पर फिर से वही जंप, पावरफुल और एक अच्छी अजाइल जंप जरूर थी, परंतु इस बार संदीप ने अच्छी तरह से उन्हें टैकल किया। डबल थाई होल्ड से शुरू कर रहे थे परंतु चलिए एंकल होल्ड के साथ समाप्त किया। पर चलिए अंत भला तो सब भला, परंतु अंत बेहतर नहीं होगा हम्पी हीरोज के लिए। हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से सेकंड हाफ में लगातार पिछड़ता हुआ नजर आता है हम्पी हीरोज, और क्योंकि सोनू लतवल वहां पर लगातार आउट ऑफ फॉर्म नजर आते हैं, ऑफ कलर नजर आते हैं। इस बार जरूर अक्षित को यहां से पॉइंट मिलेगा। और अरावली एरोज के लिए 2 सुपर 10 लग चुके हैं रेड में नवीन, तौसिफ अहमद और गंगाराम। Very much required when you are playing without Jay Bhagwan. Some other defenders and some other raiders coming to the party, and this is nice to see for the Aravalli Arrows, where they will seal that third place, and Hampi Heroes will be thinking what actually went wrong with Sonu Latwal in the second half, because he was substituted, mind you, he was substituted, then he took that break, then he came inside, then after that Tinku and Akshit just tried their best but did not get it. But what do you have to say about this guy? He's got that name today of Jalwa Gangaram, and kya Jalwa dikhaya aapne. Or this is what you can do when you fire both ends, even in the defense and even in the raiding department. But Aravalli Arrows beaten on both the departments of the Kabaddi, raiding and defense, and comfortably winning on Hampi Heroes. So they have beaten Hampi Heroes in both the departments, and it's like a big lead. Sealing the third place is so important, Harshit, in this phase of the booster round. एब्सोल्युटली, बहुत ज्यादा निर्णायक यहाँ पर तीसरा प्लेस रहेगा, क्योंकि कुछ यहाँ पर एडवांटेजेस मिलेंगे और आप यही चाहते हैं कि टॉप जितना आप ऊपर जा पाए उतना आपके लिए बेहतर है। और अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो तौसिफ अहमद की हमने बात की है, और ये खिलाड़ी जिस तरह से भीम यहाँ पर प्रदर्शन करते थे, जय भगवान हालांकि आने वाले मुकाबलों में वो जरूर नजर आएंगे, उसी तरह से तौसिफ अहमद सेकेंड हाफ में और भी ज्यादा स्पेक्टेकुलर हो जाते हैं, अपना अच्छा प्रदर्शन करते हैं, अपना जलवा बिखेरते हैं। और जब हमने बात की टिंकू को भी कुछ यहाँ पर रेड पॉइंट जरूर मिले हैं, 5 रेड पॉइंट उन्होंने प्राप्त किए, परंतु उसके बाद अगर हम बात करें
तो लगातार अरावली एरोज के लिए जिस तरह से प्रदर्शन करते हुए नजर आया है उनका एक बार फिर से डिफेंस, सोनू लतवल को लगातार अपना शिकार बनाना, अक्षित को न चलने देना, उन्होंने पूरी तरह से इंश्योर किया कि कहीं से भी वापसी के दरवाजे न खुलें हम्पी हीरोज के लिए इस मुकाबले में। Yeah, it is all that way of not expressing or not taking that quicker route towards the second half for Sonu Latwal. That is what was very, very vital for the Hampi Heroes to make a comeback in the second half. And that suggests the story, because the rate point of Aravalli Arrows is way, way higher than the Hampi Heroes, and especially the defense of Kapil Gurjar and of course Lokesh Gosalia, Mahendra Chaudhary, everybody firing in and making sure the 15 tackle points are also way higher than the Hampi Heroes. But third place sealed by Aravalli Arrows, and making sure that they go way above, way above. Look at that, points per match. It is 3.46 and Hampi Heroes 2.91. Just before this match, it was all similar. It was like a mirror image of scores. It was everything so similar. But now Aravalli Arrows have gone way above. और अगले मुकाबले की यहाँ पर अगर हम बात करें जो खेला जाएगा पेरियार पैंथर्स वर्सेस टडोबा टाइगर्स के मध्य, नवीन एक क्विक क्वेश्चन है कि आपको नजर आएंगे आशीष नरवाल, क्या लगता है आपको? I really do not want Ashish Narwal to play today in the Periyar Panthers, because he has to just rest. He has to make sure all the injuries is being really taken care of, and that also allows the bench, which really performed well in the previous match without Ashish Narwal, to come up and play well again. So let's see what happens at 6 p.m. when they take on Tadoba Tigers. I am hoping Ashish Narwal will get that all-important deserved rest of course, for him to get better, and more importantly for all the other members of the team, the bench strength, to be playing and getting confidence without Ashish Narwal. So let's see what happens at 6 o'clock. This is Naveen Shaurya signing off along with Hafiz Sharma. See you soon at 6 p.m. on Fan Code.